To remain updated with the latest business news, click on the bell icon. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। मैं हूं साक्षी बत्रा, मेरे साथ है विक्रांत गुप्ता, मैनेजिंग एडिटर स्पोर्ट्स तक के, और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुनील गावस्कर जी हैं, क्रिकेट लेजेंड हमारे साथ हैं। बहुत ही अच्छा शो इन्होंने हमारे साथ किया था। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो अभी भी बिजनेस टुडे के आप यूट्यूब चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। आईपीएल मीडिया राइट्स के बारे में अगर आपको सभी जानकारी चाहिए तो आपको वहां पर मिल जाएंगी। लेकिन ये शो होने वाला है एनएफटीज और क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया के बारे में, क्योंकि ये दुनिया स्पोर्ट्स की दुनिया से बहुत ही जल्द जुड़ने वाली है और जुड़ चुकी है, इनफैक्ट जुड़ चुकी है, क्योंकि सुनील जी तो अपना एनएफटीज लेकर आ ही चुके हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स के बारे में आपने सुना है और भी एनएफटीज लाते हुए, लेकिन अब जो बात हो रही है वो क्रिकेटिंग दुनिया की सबसे बड़ी फंडिंग के बारे में बात हो रही है, जो विक्रांत जी हमें बताने मेरे ख्याल से सनी भाई आपको तो इस बात का इल्म होगा ही, बिकॉज आपने अपने एनएफटीज खुद लॉन्च किए हैं। आईसीसी के जो एनएफटीज थे वो एक कंपनी के पास गए फॉर अबाउट $62 मिलियन। अब मतलब टीवी राइट्स का पैसा आता था, टाइटल राइट्स के पैसे आते थे, फैंटेसीज आई। अब एनएफटीज जो है क्रिकेट में किस तरह बड़े आए जी सनी भाई, एक खबर आई है और उस खबर के मुताबिक रेरियो जो एनएफटीज हैं जो क्रिकेट में लेकर आ रहे हैं, उनमें ड्रीम कैपिटल्स यानी कि ड्रीम 11 वाले $100 मिलियन की फंडिंग कर रहे हैं फॉर अ परसेंटेज। $100 मिलियन यानी कि 750 करोड़ रुपए की वो फंडिंग कर रहे हैं। वो 10% स्टेक हो सकता है, 15% स्टेक हो सकता है, और इवन अगर वो 20% स्टेक है तो यू लुकिंग एट 500 मिलियन की इवैल्यूएशन। मतलब एनएफटीज में अब आप वो 10, 15, 20, 100, 200 करोड़ से निकल के बिलियंस की तरफ जा रहे हैं। ये तो अच्छी खबर है। जो एनएफटी के दुनिया में एंट्री मारना चाह रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है। एब्सोल्युटली, देखा जाए तो अगर ये डील हो जाती है, इसकी पुष्टि अगर हो जाती है तो शायद ये अब तक की सबसे बड़ी होगी। देखिए हैं कई एनएफटी प्लेयर्स हैं मार्केट में जी। आप रेरियो की बात कर रहे हैं, और भी कंपनीज हैं। सनी भाई ने अपने एनएफटीज लॉन्च किए हैं, ये हमने बॉलीवुड में भी देखा है। बट क्रिकेट में क्या है, क्रिकेट में दो तरह के एनएफटीज होंगे साक्षी। एक मूवमेंट्स का मतलब है कि आपने जैसे राइट्स ले लिए, आपने आईपीएल के राइट्स ले लिए, आपने इंडियन क्रिकेट के राइट्स ले लिए, आपने आईपीएल के राइट्स ले लिए, सो आपको मूवमेंट्स मिलते हैं। मतलब हाइपोथेटिकली अगर मेरे पास आईसीसी के राइट्स हैं तो आई थिंक द मोस्ट सॉट आफ्टर एनएफटी वुड बी एमएस धोनी का वो वर्ल्ड कप जिताने वाला लास्ट बॉल का छक्का, परहैप्स कपिल पाजी का जो कैच था 1983 वर्ल्ड कप। तो ये बिकॉज रेयरेस्ट ऑफ रेयर होंगे, दे कैन गो इनटू मिलियंस ऑफ डॉलर्स। दूसरा होता प्लेयर कार्ड्स जैसे हम बचपन में वो खेलते थे ना, वो फीफा और ये सब गेम्स, तो उसके कार्ड्स हैं। जैसे रेरियो ने अबाउट 600 प्लेयर्स के राइट्स हैं उनके पास। ओके सनी भाई, ये बताइए आपका जो एनएफटी है उसकी वैल्यूएशन कहां तक पहुंची है? वो अभी तक मुझे पता नहीं, क्योंकि देयर वाज अ बिट ऑफ क्या बोलते हैं, स्पीड बम्प था, बिकॉज देयर वाज अ लिटिल अनसर्टेनिटी अबाउट द क्रिप्टो करेंसी सिचुएशन इन इंडिया। अभी विद द रीसेंट बजट वेयर देयर हैज बीन अ टैक्स लेविड ऑन क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी को रिकॉग्नाइज किया जाए कि नहीं, दैट वाज द मेजर प्रॉब्लम। सो नाउ आई थिंक देयर इज स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट दैट, बट नाउ आई थिंक देयरफॉर पीपल हु वांटेड टू बाय द क्रिप्टो करेंसी with their credit card etc. वो कर नहीं पा रहे थे। So now there is a little more clarity. मुझे लगता है कि शायद ये अब 15-20 दिन में I'll get a lot more clarity कि कैसा चल रहा है। पर इसमें तो मुझे सबसे बड़ी बात क्या है कि I think retired cricketers भी है, not just current cricketers, retired cricketers के लिए और एक जैसे कि एक एवेन्यू बन गई है कि रिटायरमेंट के बाद to get some income. The important thing, abhi you just talked about these two iconic moments. Ek jo of Mahendra Singh Dhoni hitting that six to win the World Cup in 2011, and then Kapil Dev's catch. Now, usme bhi now there is it's quite interesting now what is going to happen is that I'm not sure about MST, but I know about Kapil Dev. Kapil Dev is saying ki if ICC is going to do that, Kapil as somebody who's taken that catch, yes, Madan Lal as somebody who's bowled that ball, and maybe even Viv Richards who's played that shot, they all should get a share in that. Get a share, absolutely. At the moment, that is not happening. What needs to be looked at legally is when we, as a player, sign a contract with our cricket board to participate in the World Cup, participate in the series, do we therefore give our rights
our Yes. image rights to to them completely. So what they can do? We are talking about test matches. Tomorrow, for example, kal jo match hai, and Kohli gets 100 in his 100th test match, and the shot with which he gets it, then raising the bat and to celebrate the occasion, to acknowledge the ovation of the crowd. वो उसकी NFT बनेगी. Who has the right? Does Kohli have the right, or has Kohli signed up to give it? Does then the broadcaster have the right? Does BCCI have the rights? These are going to be legal issues very very soon. सर मैं इसमें एक मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो आईसीसी राइट्स की आप बात कर रहे हैं, यू 100% करेक्ट. उसमें ऑलरेडी एक डिबेट और डिस्प्यूट है कि भाई आईसीसी 1983 जब आप जीत के आए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स तो होते नहीं थे. भाई आईसीसी के कॉन्ट्रैक्ट्स तो जो है वो 1999 वर्ल्ड कप ऑनवर्ड्स है ना. बट आप 83 का अगर दिखाते हो तो व्हाट हैपेंस. बट इसमें शायद जो वेरियस क्रिकेट बोर्ड्स के राइट्स आएंगे या कल को आईपीएल का राइट्स आते हैं, आई थिंक उसमें एक बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल बनाना पड़ेगा जहां पे बीसीसीआई अगर अपने राइट्स दे, जैसे सनी भाई, अब जब बीसीसीआई के राइट्स आएंगे, इंडियन क्रिकेट के राइट्स आएंगे, तो एक बॉलर थे पाकिस्तान के जिनका नाम था इजाज फकी. अहमदाबाद में एक टेस्ट मैच हो रहा था और सनी भाई ने उस ऑफ स्पिनर की बॉल को हल्का सा ऐसे लेट कट किया था और फिर इन्होंने भागते भागते, सिर इनका नीचे था और हाथ ऊपर था. वो क्रिकेट इतिहास के फर्स्ट बैट्समैन एवर जिसने 10,000 रन बनाए थे. अब वो एनएफटी जो है वो इनकी भी प्रॉपर्टी है, बीसीसीआई की भी प्रॉपर्टी है. बट आई थिंक जब बोर्ड्स के राइट्स आएंगे सनी भाई, ये चीजें उसमें देखी जाएंगी कि प्लेयर्स को क्या परसेंटेज उसमें दिया जाएगा. और होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए प्लेयर इज agreeing to play for the country, play for the team. तो उसके साथ he is not giving everything away to the board or to the ICC. ये जो आप 1983 की बात कर रहे हैं, वो BBC के पास राइट्स है, ICC के पास भी राइट्स नहीं, वो कैचेस है. तो कपिल इज सेइंग कि आप बार बार दिखा रहे हैं, आप उसे बेच भी रहे हैं. If somebody comes to take, we want that for some show or something like that, we want that. You are selling that catch of Kapil to somebody else who wants to buy that footage. BBC is getting money. Kapil is getting nothing. Kapil is getting a big under. Kapil, Viv Richard, Madan Lal, they all should get. Or agar if I want to be in the picture also, I'll say, yeah, I was in first clip. You have seen my backside, so you have to also show, you have to also. नहीं, आपको तो जब जिमी पारी वाला महिंद्रा मनार का वो माइकल होल्डिंग का एलबीडब्ल्यू है, तो बॉल तो आप ही नहीं उठाई थी, बॉल आपकी जेब में. कलेक्टिबल्स में वो बॉल भी जा सकती है बाय द वे. हालांकि आई नो फॉर श्योर कि आप उसको निकालेंगे नहीं, बट वर्ल्ड कप आपको पता है 83 में जो इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल जीता है, तो कपिल सनी भाई ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने नहीं देखा, समझ गए इंडिया जीत गया, ये सिर्फ भागे हैं, इन्होंने बॉल उठाई है और अपनी जेब में डाल के कहते मैं भाग गया ड्रेसिंग रूम. वो सबसे बड़ा कलेक्टिबल वो भी है इस वक्त, शायद बहुत ज्यादा दुनिया को पता नहीं है वो भी. सो एनएफटीज में कलेक्टिबल्स भी आ जाते हैं. जी बिल्कुल. 4 रन वाला बैट है आपके पास? जी है, बिल्कुल है. Are you going to be putting that out in the NFT that you are putting out? It will come through. There's a nice Hall of Fame coming through on the NFT that's worth having a look at as well. इस बैट की क्या वैल्यू, मतलब अगेन आई एम सॉरी वैल्यू वर्ड यूज कर रहा हूँ, I don't know. आपका औजार कह लीजिए, but $2 million, $4 million, $5 million? I don't know, priceless. You remember I'd given the bat with which I scored 30th century to Jeff Tujo? Exactly. At the time. So 2 years ago when we were in the West Indies, we went to his house and he had the bat and he showed it. Here it is. So I said, well, can I take it back? जो एसडी सनी टनी था ना सनी भाई, वो इजाज फकी वाला, तो वो बैट की कीमत थी 690 रुपए. सनी भाई ऑफ कोर्स वुड नॉट नो द प्राइस बिकॉज वो मतलब खुद उनका एसजी ने लॉन्च ही, और हम बचपन से सोचते थे इनका सुनील गावस्कर को, खैर बट ही वाज द बिगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर. 690 रुपए का बैट होता था, और आज अगर एनएफटीज आती हैं 2, 3, 4, 5 million, nobody knows. Nobody knows. Absolutely. It's amazing.
And with Rario as well, what we are hearing, the $100 million funding, I think what we are catering to is that they also have about 600 cricketers, international cricketers on the platform, and they have procured the rights to 5 international leagues as well. So most of those iconic things will be up in that NFT as well. I wanted to also understand what kind of opportunities does it create in the cricketing world and in the sporting world to have NFTs and cryptocurrencies? You know, where do you see this growing? I think the sky is the limit. Such no. The sky is the limit, because there is, every match is probably a mine, a gold mine, diamond mine for NFTs. Every match, every sporting encounter. It doesn't have to be cricket. It is tennis. You take it. Every sporting encounter is like a gold mine for NFTs. It could be just footage today. Could be NFT tomorrow or day after. So I think the sky is the limit. How do you see this for the common people, for investors? Only so, of course, we know that, we are one of the biggest downloaders of games in, cricket games and otherwise sporting games in India. Indians love to play games on their mobile phones as well. So far we used to have this play to win contest. And now with the NFTs, they can go from play to earn now. It's also a yes. There'll be so many opportunities. Opportunities for the investor. To say, look, I want it, and then because obviously he can exchange or he can resell the NFT to somebody else who's very desperate, because एक ही होती है ना NFT. There'll be only one NFT. It's unique, yeah. Of a particular incident, there'll be only one NFT. Exactly. And सर, जो आप बात कर रहे थे, आप users की बात कर रहे थे, देखिए ये मैरिज भी क्या है. सपोज हाइपोथेटिकली मैं रेडियो और ड्रीम कैपिटल्स की बात करूं. ड्रीम कैपिटल्स इसको फंडिंग कर रहा है रेडियो को. अभी $100 million की हमने खबर पड़ी है. वो व्हाटएवर स्टेक रेडियो के ऊपर स्टेक चला गया. बट रेडियो को क्या मिलता है? वो इतने प्लेयर्स अगर उन्होंने 600 बना दिए या 5 लीग ले ली, कल को वो और प्लेयर्स बनाएंगे और लीग्स बनाएंगे. आपके पास प्लेयर कार्ड्स आएंगे, अब गेम्स भी तो आएंगी. अब ड्रीम 11 के पास 140 मिलियन यूजर्स का डेटा नहीं, उनके पास 140 मिलियन यूजर्स हैं उनके पास. सो वो भी ट्रांसलेट होते हैं. तो जब NFTs या आप गेम कार्ड्स लेके आएंगे तो वो यूजर्स वो भी खेल पाएंगे. तो ये तो मतलब एवरीबॉडी इज मेकिंग मनी. आई डोंट नो, रिसेशन फ्री क्रिकेट ही है सनी भाई बस. बिल्कुल, एटलीस्ट इंडियन क्रिकेट. Sure, perhaps. At least Indian cricket. Indian cricket is definitely recession-proof. But yes, of course, like you pointed out, there is still an overhang, sir, because in the Indian environment, we still don't know what stance will the Indian government really take, because there's constant pressure from the legal authorities as well, that the government and the center should now make a clear stance as to where do they stand on cryptocurrencies. Is it in the legal framework or not? And of course, by taxation, government has constantly said that we are not legalizing it. By taxing certain things. So we still don't know where the future takes us. But globally, if many things are being accepted like this, and if there is a win-win situation, why not? By taxing it, the government also makes a cut. The people who want to get involved. Do you think there is any The good thing about NFTs right now is कि आपको सिर्फ उसको क्रिप्टो करेंसी में नहीं खरीदना है. मैं अपने क्रेडिट कार्ड से भी उसको खरीद सकता हूँ. I mean, आप yes, I think क्रिप्टो करेंसी जिस कंट्री से आप खरीद सकते हैं वो होगा, बट आप उसको अपने क्रेडिट कार्ड से भी खरीद सकते हैं. सो दैट इज वन एरिया जहां पर NFTs कह रही है कि लुक, वी आर लीगल, हमारे में कोई दिक्कत नहीं है. बट अगेन, लाइक यू सेड, एंड यू वुड हैव मोर डिटेल्स, टाइम विल टेल कि उसमें ग्रे एरिया है या नहीं है. Absolutely, sir. So last word from you, sir, on the NFT and crypto bit in the world of cryptocurrencies. I, recently also read a report from Deloitte, which actually talked about a figure. I had noted it down that in India alone, if we talk about the world of entertainment and sports, in fact, NFT can actually create a world of even $1 billion and above. That's the latest report that I read from Deloitte. I want to be more than that, actually. Yeah. Very, very soon is what I mean. Like, I'm just missing that point, but I did read that just before coming onto this show, and I wanted to discuss that. So just like how you pointed out, sky's the limit. Help us understand your last words on this whole issue. Well, I think it's an exciting time, to be honest. But obviously, the more clarity that we can get from the government of India on what its stance on cryptocurrency and also the NFT would be, that will help a lot. Because at the moment, जैसा मैंने बताया कि because of this little speed bump of uncertainty, at least as far as my NFT thing is concerned, it's been a little bit like a pause ka button.
It is on pause at the moment. So as soon as we get a lot more clarity, we will be able to go forward. And not just me, like I said, all the retired sports persons. For them, it will be an Are they avenue. coming to you for advice? I want to know. Are they coming to you for advice? Should I also launch my NFT? Nobody comes to me for advice. All your But if friends. anybody comes, I'll be very happy to say, this is the way forward, and certainly dip your foot in the water. Okay, understood that. Well, on that note, thank you so much, Mr. Gavaskar. It has been absolutely a delightful experience speaking to you. And thank you so much for sharing all these wonderful insights. We will keep getting you on this world of NFT and cryptocurrencies on Business Today. Thank you so much. And thank you so much, Vikrant, Thank you, Sakshi. for Thank you so much. getting us this interesting conversation, and very, very insightful at that as well. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.